Welcome to the Voice of Hygiene. I am Dr. P.A. Kareem, Director, Hygiene Hospital for Naturopathy and Yoga, Calicut, Kerala. Today, we can discuss about the basics of the naturopathy or the history of the naturopathy. See, naturopathy is the most modern medical science. It came from the US. Then it spread all over the European countries. Then after, in 1915, Mahatma Gandhi took this to India. He was practicing as a barrister in South Africa. At that time, he came to know about this naturopathy and he understood and practiced the system there. After then, he came to India and established the first naturopathy hospital in Sabarmati. Everybody knows that Sabarmati Ashram. What is the meaning of the word ashram? Ashram means hospital. Vishram karne ki jagah. That is the first naturopathy hospital in India. इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों से आजादी मिलने से क्या फायदा, इसके साथ साथ हमें 3 और चीजों से भी आजादी चाहिए. वो क्या, बीमारियों से, दवाइयों से, खासकर डॉक्टरों से भी आजादी मिलना चाहिए. तो ही कंप्लीट फ्रीडम, मुकम्मल आजादी उसी वक्त हासिल कर सकते हैं. तो नेचुरोपैथी क्या बताते हैं, सुनिए. ये सिस्टम व्हाई this is a most modern medical science. Treating the diseases with medicine is already outdated. Likewise, writing the letter is outdated. New technologies came. So we are using our thumbs to send messages. So this is around 25 years before की बात है. मगर 175 years before अमेरिका के साइंसदानों ने इस साइंस को आगे रखा कि body can heal itself. We need not to give any kind of medications. Such a system is inside. So what should be done? We have to follow the callings of the nature. Obey the call of nature. By medication what happens, दवाई कभी किसी बीमारी को आराम नहीं देता. दवाई सिम्टम को सप्रेस कर देता है. इसका फायदा क्या होता है, इमीडिएटली हमें इसका एहसास नहीं होता. हेडेक है, मुझे दर्द सर है, मगर एक गोली खाई मैंने, मुझे इसका एहसास नहीं, मगर प्रॉब्लम अंदर है. तो उस वक्त एक और प्रॉब्लम ये निकलता है कि इस बीमारी के लिए जो दवाई मैंने खाई है, ये दवाई एक जहर है, ड्रग है. इसके साइड इफेक्ट, सैकड़ों साइड इफेक्ट्स होने वाला है. तो कभी हमेशा आराम, टोटल क्योर कभी नहीं होता. इसलिए naturopathy basically against these medications. In such unavoidable casualty cases, circumstances, we can use medicines, that's all. Magar, if we are willing to change our diets, change our lifestyles, food styles, so we get total relief from the diseases. We can discuss what are the problems, how can we solve the problems, and how can we get relief from the diseases without medicine afterwards.